Okay, we are going live on YouTube. In 1 more minute and then we'll start. Yes, Atul bhai, you can please begin. ઓકે રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, બંગાળ ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના આજના પ્રવચન એનિબેસન્ટ એક ગુડવિથ હતા ના વક્તા શ્રી શિખર અગ્નિહોત્રીજી, મધુશ્રી, તપસ્વિની સામંતરાજી અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત આપણને કેશવરબેન વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, शिखर जी, मधुश्री जी और तपस्विनी जी, आप सभी का स्वागत है. और समय की सीमा को संयम में रखते हुए मैं शिखर जी का परिचय देता हूं और फिर हम शुरू करेंगे. शिखर जी बैचलर ऑफ साइंस हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये डिग्री हासिल की थी. उसके बाद वो मर्चेंट शिपिंग में चले गए और वहाँ से उन्होंने वॉलंटरीली 10 साल से वहाँ की सेवा करने के बाद अपनी अंदरूनी जो यात्रा होती है उसको जागरूक रखने के लिए वहाँ से उन्होंने उसे छोड़ दिया. और उसके बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत सक्रिय हो गए 2008 से. वसुमती जी से उन्हें ये विरासत में मिली थियोसॉफी की सारे ज्ञान और सोसाइटी की सदस्यता और सब कुछ, और इसीलिए वो इतने इसमें रच बस गए. उन्होंने बहुत सारे स्टडी कैंप किए हैं, यूथ कैंप्स किए हैं, पब्लिक लेक्चर्स दिए हैं और थियोसॉफिकल अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो बहुत कठिन कठिन विषय हैं उन सभी पे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में न सिर्फ लेक्चर दिए हैं बल्कि स्कूल और कॉलेजेस में भी वो गए हैं. उनके आर्टिकल्स इंटरनेशनल मैगजीन में प्रस्तुत हुए हैं और जैसे कि द थियोसॉफीज, द इंडियन थियोसॉफीज, वेक अप इंडिया, फ्रेंच एंड स्पेनिश थियोसॉफिकल मैगजीन्स वगैरह वगैरह. इंटरनेशनल स्पीकर तो हैं ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के और कई इंटरनेशनल थियोसॉफिकल फोरम में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है. उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, प्रज्ञा सी स्टूडियो, जो कि मई 2020 से शुरू हुआ और बहुत सक्रिय है थियोसॉफी में. इस वक्त अड्यार के मुख्यालय में हैं और काफ़ी मुख्य विषयों को संभालते हैं. जैसे पिछले साल भी वे कन्वेंशन मैनेजर थे और इस साल भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है उन्हीं की देखरेख में संपन्न होता है. हम बहुत खुशनसीब हैं कि वो उतना समय निकाल के आए जबकि कन्वेंशन की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. थैंक यू सर, वेलकम. आप अपने विषय पर शुरू कीजिए. Thank you, Taral ji, for your kind words. And first of all, I extend my gratitude to all the office bearers and members of Reva Lodge, Rohit Lodge, Jyoti Lodge, and Sister Madhushreee and Sister Tapaswini for translating this talk. And really, it is a great work that through these online meetings that Taral ji and Archana ji and together with all the other members are doing that. So, dear and respected sisters and brothers, actually we know all of us must have read a lot about Dr. Annie Besant, and it is a matter of great
pleasure and honor to be here in front of you all to share a few incidents, events, and insights about that aspect of the life of Annie Besant, because we all know many other aspects of her life which she did in a social upliftment of the weaker section of the society, as a reformer in education and many other things. But today we are going to concentrate on that aspect of life of Annie Besant, which not only permeated, but also in my view and understanding was the source of inspiration and guidance in every other aspect of her life. And not just that, it was due to the exposure to this dimension of life that gave Annie Besant a completely new and broader vision of life. And as we all know that Dr. Annie Besant passed through several phases of her life, be it a housewife, and at one point of time propagator of atheism, a trade unionist, a feminist leader, and a Fabian Socialist before coming in touch with H.P. Blavatsky. Why did she do all those things? The reason behind all of these were her way of removing the suffering of the poor, helpless, and downtrodden. But how did it all change? How, after she came in touch with H.P. Blavatsky, became a theosophist, she actually literally removed all the other parts or aspects that she was associated with earlier. In her own words, such was the effect of the theosophical teaching. In her own autobiography, she writes that such was the effect and influence of theosophical teaching as laid before her by H.P. Blavatsky. And when she urged out of her bitter knowledge of the miseries endured by the poor, because just to give a preface for this statement that I have taken from her autobiography, that because also Annie Besant was a very rebel kind of soul. So when HPB started talking to her about occultism and spirituality, the social reformer within Annie Besant came out, and she was almost, telling her that there is so much negativity, so much evil in the society. So many people are poor, helpless, they have to be helped. But then, due to the effect of theosophical teaching given by HPB, it made her look beyond the moment, beyond the temporarily removal of suffering, and made her saw how the suffering must come back and back with every generation, unless we aim to remove the roots of the suffering or the roots of the wrong that has happened. So that was a very important turning point, as it is also said in Voice of the Silence, that anybody can give the food for the body, but there are only few who can give food for the soul, food for thought. And because if we bring about a change in a person's thought process, we change the life of the person. So what HPB said about this when she was talking to Annie Besant, that I do not judge a woman, she is talking about Annie Besant now, who has resort to such means of defense in the middle of circumstances so evil, and whose ignorance of the real causes of all this misery is her excuse for snatching at any relief. Now, this is very important to understand for any person. I mean, at that point, Annie Besant, but for any person, and that is why I am just sharing some of these incidents and I said insights, because it applies to all of us who can actually thought over upon them and
contemplate, reflect upon them, and implement in our own life. So H.P. Blavatsky says that she is not judging Annie Besant because Annie Besant thought that this is the problem and this is the solution. And whatever solution, temporary solution she got hold of, she did it. But HPB says further, but it is not for you, an occultist, to continue to teach a method which you now know must tend to the perpetuation of the sorrow. So basically what she's trying to tell, that once a person begins to understand the deeper aspects of life, that it is not individual disconnected life, at random life some things are happening or some coincidents are taking place, but there is an underlying interconnectedness of individuals, forms, which are governed by a universal law. Until then, if somebody thinks that temporary solution is okay, it's okay, because it is based on our understanding. But once a person begins to understand this, then the person has to work on the real roots of any situation, given situation. And that's why Annie Besant says that I felt that H.P. Blavatsky was right. And although at that moment, she shrank from the decision. And what was the decision? Because at that time, Annie Besant was printing a lot of things. She printed a very a pamphlet which created a lot of controversies on law of population, or at that time. But she made the decision. She refused to reprint the law of population or to sell the copyright, even though she understood that this will affect in a bad way to all the brave and loyal friends who had so generously stood by her in that long and bitter struggle. But still, since she understood and since she had the reason to do so, she did it. So that's how we can understand that how the deeper understanding of life, of our situation in any given point of time, be it pleasure, pain, suffering, or a good time or a bad time, challenge, easy. Then instead of trying to find out a shortcut solution or immediate solution, we begin to work on the real deeper roots of that situation. We all know or might have heard at some point of time that Annie Besant was described as a diamond soul. And just like the light shines from every aspect of a diamond, in the same manner, the divine light shone out from every aspect of her personality, be it an outstanding orator of her time, a champion of human freedom, educationist, philanthropist, and author, with more than 300 books and pamphlets to her credit. But the aspect of her life which we all are aware about is being a great occultist. But very often, when we use the word occult or occultism or occultist, it is surrounded with a lot of doubt and prejudices about it, against it. But such doubts and suspicions are completely misplaced if we understand the real meaning of what is occult. The occult comes from a Latin word occultus, which means hidden or secret. And it is simply meaning the knowledge of the hidden. So basically, whatever that is hidden from our physical senses is the occult word. And the occult word is not hidden from us because there is like some law, or there is certain kind of situation that it has to be occult. It is only occult because we have not yet developed the senses
beyond the physical. And those individual who has such capacity of probing in those realms of consciousness which are beyond the physical obviously becomes an occultist. And the third objective of the Theosophical Society is an indication towards that, which is to investigate the unexplained laws of nature and the powers latent in a human being. But the thing that is to take inspiration from Annie Besant's life is that Annie Besant was not always an occultist. Although she had a great potential, and I would like to take you all to the time excuse me, that led Dr. Annie Besant on the journey of manifesting this potential and becoming a great occultist. In her own autobiography, Annie Besant writes that since 1886, there had been a growing conviction within her that her philosophy was not sufficient. And by her philosophy, what do we mean by that? All the solutions that she was trying to offer to the situations, to the evil that was existing in the society at that time, that was not sufficient, that life and mind were more than she had dreamed. And psychology at that time was advancing with rapid strides. Hypnotic experiments were revealing unlooked for complexities in human consciousness, the strange riddles of multiplex personalities, and most startling of all, vivid intensities of mental action. Fact after fact came hurtling in upon me, demanding explanation I was incompetent to give, she writes. That there were so many discoveries happening at that time, around 1890s, 1886, that she was not able to explain or understand what all these things. So she studied the obscurer sides of consciousness, like dreams, hallucinations, illusions, or insanity. And she was, trying to get something to hold on to. And into this darkness, a ray of light came through A.P. Sinnett's book, The Occult World. Then Annie Besant added spiritualism to her studies, experimenting privately, finding the phenomena indubitable, but the spiritualistic explanation of them incredible. Means that she was witnessing that, yes, such things happen, but the explanation that was being given by spiritualistic people at that time, she was not able to, get fully convinced. The phenomena of clairvoyance, clairaudience, thought reading were all found to be real. And she experimented in various ways suggested in them, and she got some curious results. And by early spring of 1889, so that is about 3 years, in 3 years' time, she was continuously researching, trying to find some solution, understanding. By 1889, she was convinced that there was some hidden thing, some hidden power, and she grew desperately determined to find at all costs what she was searching for. And this gives us another hint or law of nature. There is a saying that when the disciple is ready, the master appears. Or when somebody is looking for something, trying to solve some challenge or problem, and the person is thinking about it all the time, then the nature responds in some way. And so in this state of seeking, when she was almost desperate, frustrated, she heard a voice, and that voice was to later become for her
the holiest sound on earth, most likely the sound of her master. And that sound, the voice, told her to take courage because the light was near. Because it happens with, and it can happen with anyone actually. And it is also said that the darkness is at its peak when the dawn is about almost there in the morning. So it happens with our psychology also. When we are trying very hard for something, we feel almost frustrated, desperate, and about to lose or quit. That is the time when we should hold on. We should take courage because the solution is very near. And proving that inner voice to be true, in about 15 days time, about 15 days later, Annie Besant found herself writing the review of the 2 volumes of The Secret Doctrine written by H.P. Blavatsky that was given to her by the editor for the paper for which she was working. And while going through The Secret Doctrine, she realized that her long and tiring search was over. And the very truth that she was looking after was found. And that is why in her review of The Secret Doctrine, Mrs. Annie Besant made it very clear that there is very much more to be known than our present faculties can grasp. She stated that there is nothing supernatural. The only thing we call supernatural is because we are still ignorant of the laws of nature that govern such phenomena. And the occult powers we possess are not supernatural. They are latent in every human being, and they will be evolved as the human race, as collective, progresses and gives way to a more evolved human race in which the powers that are considered now supernatural, paranormal, or extrasensory powers will become very, very common. Just like we can see, read, think, and walk, the power of clairvoyance, clairaudience, thought reading, and the other things are going to be very, very common in the coming times. That's what she wrote. And I will stop here for the translation. And thank you, sir. Right on time. And yes, Madhushri is here. Yes, welcome, Madhushri, and I'll just give her your brief introduction. We are lucky to have Madhushri Choudhury ji. She is a science teacher in school, also a printing technologist, and has done MPhil in media science. She is secretary of ATODI, a foundation for interreaction of Buddhist heritage and culture. Presently working as for the lost heritage of Buddhism in Bengal, with the financial support of Ministry of Culture, Government of India. She has performed and designed few cultural activities at the first Buddhist Heritage Festival, made a few documentary films like Sadak, based on life of eminent Indo-Tibetologist Professor Suniti Kumar Pathak, raised by the Asiatic Society. She is a regular speaker and performer in various international seminars. Her articles has been published in international journals. She is also associated with, of course, the Bengal Theosophical Society, and she is the secretary of it. हाल ही में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क मेंशनिंग जो उनका अचीवमेंट है, was directing a dance titled Pranir Pradeep by Atodi, based on Tagore's thought on Buddhism, in front of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji at New Delhi during 218 Vesak Day. और कुशीनगर में बौद्ध सम्मेलन में महापरिनिर्वाण भी ऑर्गेनाइज हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने परफॉर्म किया था, वहाँ भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उपस्थित थे। ये 2021 की बात है, तो बहुत बढ़िया है। और आज हम इन्हें मधुर बंगाली लैंग्वेज में सुनेंगे। ओवर टू यू मधुश्री। Thank you so much, Brother Tarun Munshi ji.
I'm feeling very honored to be here, and I'm very new as a speaker in this theosophical platform. So I'm a bit shaky also today, and I'm in a vacation with my family today, but I couldn't refuse you because previously also I thought of joining this esteemed platform, but I couldn't. Yeah, please. Yeah, have I unmuted me? Yes, you are. You audible? Okay. Yeah. Respected brothers and sisters, I feel very honored to be here. আর আজকে আমি এখানে অ্যানিবেসেন্টের যে জীবন চর্চা সেইটা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এসেছি, এবং সেখানে আমাদের বিষয়টা আজকে যেটা বলা হচ্ছে, যেটা তরুণ মুন্সিজি যেটা লিখে পাঠিয়েছেন, অ্যানিবেসেন্ট একজন গুচ্ছ সাধক, একজন গুপ্ত সাধক এবং গুপ্ত জ্ঞানী। ঠিকই আছে, আমরা এটাকে আরো বলতে পারি একজন গুহ্য সাধক বা গুপ্ত বিদ্যা চর্চাবিদ হিসাবে। এবং এই আলোচনার মধ্যে অবধারিতভাবে আরেকজনের নাম চলে আসেন, যাকে আমরা সবাই পূজনীয় হিসেবে জানি, হেলেনা পেট্রোনস্কি ব্লাভাস্কি। তার প্রভাব অ্যানিবেসেন্টের জীবনে অপরিসীম। যখন তার সঙ্গে ম্যাডাম ব্লাভাস্কির আলাপ ছিল না, তখনও কিন্তু কম বৈচিত্র্যময় ছিল না তার জীবন। তখন তিনি একজন গৃহবধূ, নাস্তিক্যবাদের প্রচারক, একই সঙ্গে তিনি একজন নারীবাদী নেতা কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, এবং আবার একজন ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট। এত কিছুর মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে কিভাবে পীড়িতদের দুঃখ দুর্দশা তিনি দূর করবেন। কিন্তু যখন তার সঙ্গে ম্যাডাম ব্লাভাস্কির তিনি যখন ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সান্নিধ্যে আসলেন, তখন তার জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি যেন জীবনের একটা অন্য দিক যেন তার সামনে উন্মোচিত হলো, এবং তার বলা যেতে পারে জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ ঘটলো। দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কোথায়, দুঃখ মুক্তির উপায়গুলো কি, এই এবং সব থেকে বড় কথা, দুঃখের যে রুট কজটাকে জেনে দুঃখকে সমূলে উৎপাদিত করা, সেগুলো শুধু জন্ম থেকে জন্মান্তর নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমরা যেন দুঃখ মুক্তির উপায় খুঁজে পাই। এরকম একটা প্রাপ্তি তার হলো। এই যে জীবনটা, এই যে জীবনের যে অনুসন্ধান, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু তার প্রাপ্তি হলো ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সান্নিধ্যে এসে, এবং তিনি একটা আলোকিত জীবনের সন্ধান খুঁজে পেলেন। আমরা অ্যানিবেসেন্টকে জানি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা হিসাবে, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে, সমাজসেবক হিসাবে, এবং বহু গ্রন্থের তিনি রচয়িতা, এই হিসাবেও আমরা সকলে তাকে চিনি। কিন্তু যেটা আমাদের মধ্যে সেরকম চর্চা হয়নি, যেটা চর্চিত নয়, সেটা হলো তার একজন অকাল্টিস্ট হিসাবে, অর্থাৎ জাদুবিদ্যা চর্চাবিদ হিসাবে তার ভূমিকা কি, তাকে কিন্তু আমরা সেভাবে জানি না। বিদ্যুৎ মহলে আজও অব্দি একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই অকাল্ট শব্দটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে গেছে একদম গোড়া থেকে। এবং এই যে অকাল্টিজম, এই শব্দটার প্রকৃত অর্থ যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা বিশ্ব প্রকৃতি কিংবা মানব সত্তার যে প্রকৃত রূপ, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। এই গুপ্ত রহস্য আমরা বুঝতে পারি আমাদের শারীরিক যে ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, আমাদের অতীন্দ্রিয় সত্তা দিয়ে, যেটা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে গিয়ে আমাদের তাকে অনুসন্ধান করতে হবে। এবং যিনি আলোকিত পথের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি কিন্তু আমাদের যে ইউনিভার্সাল লজ অফ নেচার, আমাদের যে অব্যক্ত যে প্রকৃতিক নিয়মগুলো আছে, এবং মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যে ক্ষমতাগুলো, যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো একটা অপার্থিব জীবন বোধে আমরা ভেসে যেতে থাকবো। অ্যানিবেসেন্ট সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট মানুষ পেড্রো অলিভেরা লিখছেন যে অ্যানিবেসেন্ট যখনই তার মধ্যে সেই শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন, তার মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উপলব্ধি করেছিলেন, তখনই কিন্তু তিনি ম্যাডাম ব্লাভাস্কির
দ্য সিক্রেট ডক্ট্রিন এই বইটি পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন। এবং যত যত যেভাবে তার আত্ম উপলব্ধি হতে থাকলো, তিনি তার আত্মচেতনার এই পথে তিনি যখন চলতে লাগলেন, পরতে পরতে একটা নতুন জীবন তার সামনে খুলে গেল। নিজেকে দিয়ে তিনি বুঝলেন যে এটা কিন্তু অতি প্রাকৃত ঘটনা বা অলৌকিক কিছু ঘটনা নয়, সাধনা লব্ধ সত্তা দিয়েই আবিষ্কার করতে হয় নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক অন্য আমিকে, যা অনেক সময় থেকে যায়, যা অনেক সময় আমরা ধরতে পারি না। সাধনার অন্তিম পর্যায়ে যদি আমরা না যেতে পারি, আমাদেরই মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত শক্তির খুঁজে পাওয়া, এই হলো জাদুবিদ্যা চর্চার মূল লক্ষ্য। এখানে অ্যানি বেসেন্ট যেটা খোঁজ করেছিলেন সেটাই কিন্তু আমাদের বাংলাতে আমরা বা ভারতবর্ষে যেটা আমাদের আরেকটা অল্টারনেটিভ চর্চা হয়, বাউল, ফকির, দরবেশ, সাই বা ফকির, এদের মধ্যে রয়েছে আমারই মধ্যে এক অন্য আমিকে খোঁজা। রবীন্দ্রনাথও যার সন্ধান করেছিলেন, মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ বলছেন। বাউলরা বলছে আমাদের রূপসাগরে মনের মানুষ, রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রাণের মানুষ। এবং আমরা যেটা বললাম যে আমরা বলছি যে এটা অলৌকিক মন চর্চা যত গভীরে থাকবে, অনুসন্ধান যত গভীরে যাবে, ততই কিন্তু আমাদের মানব সভ্যতা কিংবা আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল যে মানব সত্তা তার বিকাশ ঘটবে। এই সময় তিনি এই সময়টা আমি বলছি যখন তিনি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সান্নিধ্যে আসেন, তিনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আর গুরু কি চাইলেন? আমরা বলি যে গুরু পাওয়া যায় লক্ষাধিক, কিন্তু শিষ্য পাওয়া ভার। অর্থাৎ ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি কিন্তু একটা প্রকৃত আধার খুঁজছিলেন, যেটা তিনি অ্যানি বেসান্টের মধ্যে দেখতে পেলেন, এবং তিনি প্রকৃত আধার খুঁজে পেলেন। তিনি স্নেহে বিগলিত হলেন এবং অ্যানি বেসান্ট গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে তিনি ধন্য হলেন। দুটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে অ্যানি বেসেন্ট সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে, যেখানে কাউন্টেস ওয়াচমেস্টার বুঝেছিলেন যে অ্যানি বেসেন্ট হচ্ছেন ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির প্রকৃত উত্তরসূরি। একদিন তিনি দেখেছিলেন যে অ্যানি বেসেন্টকে ঘিরে আছে একটা অরা, একটা অদ্ভুত আলো তাকে ঘিরে আছে, এবং সেটাতে তিনি মাস্টারদের যে রং সেটা পরিদর্শন করেছিলেন। এবং তিনি যখন সেটা ব্লাভাটস্কিকে বললেন, তিনি কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। এবং তিনি আরো দেখলেন এই আরেকটা ঘটনা যেটা তিনি দেখলেন, যে তিনি কিন্তু আগে অ্যানি বেসেন্টকে এতটা দক্ষতার সঙ্গে, এতটা বাগ্মিতার সঙ্গে বক্তৃতা দিতে দেখেননি, যেটা নাকি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সঙ্গে তার যখন আলাপ হলো তারপরে তিনি দেখতে পেলেন। এই সময়টাই কিন্তু তিনি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির কাছে জাদুবিদ্যা চর্চা করছিলেন। আবার ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি একটা নোট লিখেছিলেন আমাদের অ্যানি বেসেন্ট সম্পর্কে, যে তিনি বলেছেন যে তার অপরিসীম সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থতা এবং আপোষহীন মনোভাব এবং পরার্থপরতা, এই সবকিছুরই আরেক অপর নাম হচ্ছে অ্যানি বেসেন্ট। এবং খুব অল্প সময়ের আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন যে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সমস্ত অন্য যে সদস্য ছিল তাদের সবাইকেই অ্যানি বেসেন্ট ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এতটাই ছিল তার সত্যানুসন্ধানের ক্ষমতা। সভ্যতার একদম আদি লগ্ন থেকে আমরা দেখেছি সায়েন্টিস্টরা, বিজ্ঞানীরা এবং যারা সত্যানুসন্ধানে রয়েছেন, যারা স্পিরিচুয়াল লিডার্সরা, তারা তাদের নিজস্ব যে খোঁজ, কেউ বিজ্ঞানের যুক্তি নির্ভর যে খোঁজ, আধ্যাত্মবাদীরা তাদের অতীন্দ্র আত্মা, অতীন্দ্র সত্তা দিয়ে খোঁজ করেছিলেন এই বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যকে, বিশ্ব সত্তাকে তারা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এমনই খোঁজ কিন্তু করেছিলেন অ্যানি বেসেন্ট, এপি সিনেট এবং মিস্টার লিডবিটার। এবং সেখানে তারা রাসায়নিক পদার্থকে তাদের দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই বিষয়টি নিয়ে এক সময় প্রসিদ্ধি লাভ করে অকাল্ট কেমিস্ট্রি হিসাবে। অ্যানি বেসেন্ট তার সারা জীবন ধরে
সত্যানুসন্ধান করে গেছিলেন এবং সবসময় তার মধ্যে একটা আকুতি ছিল, একটা রেস্টলেসনেস ছিল যে তিনি কিন্তু তার দর্শনের যে খোঁজ, তার দর্শন চর্চা যেন সঠিক হয়নি, যেন শেষ হয়নি, এবং তার মধ্যে একটা আকুতি ছিল কিভাবে মানুষের দুঃখ দুর্দশা তিনি দূর করবেন, কিভাবে একটা কুসংস্কার মুক্ত সমাজ তিনি মানব সভ্যতাকে দিয়ে যাবেন, এবং কিভাবে তিনি জাদুবিদ্যা চর্চার একজন একনিষ্ঠ ছাত্রী হিসাবে আত্মানুসন্ধানের পথে সমস্ত সুখ দুঃখকে বিসর্জন দেবেন, সমস্ত পার্থিব সুখ দুঃখকে বিসর্জন দেবেন। এবং তিনি বুঝেছিলেন যে জাদুবিদ্যা চর্চার বা গুচ্ছবিদ্যা চর্চার এটাই মূল উদ্দেশ্য। আমরা এখন জানলাম যে আমরা আরো কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি যে একজন জাদুবিদ্যা চর্চাবিদ হিসাবে অ্যানি বেসান্টের ভূমিকা, কিন্তু অ্যানি বেসান্টের অবদান অপরিসীম এবং অপরিহার্য। এই বিদ্যার উপর ভর করে এখন আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন করছি। এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে এই অকাল্টিজম, এই জাদুবিদ্যা চর্চার উপর ভর করে কিন্তু তিনি দেশমাতৃকাকে একটা অন্য সত্তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে। স্বদেশ ভাবনা তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল প্রকৃত স্বরূপে। সেই ভাবনায় তিনি বলিয়ান হয়েছিলেন। আমাদের দেশজ কবি একটা কথা বলেছেন, দেশকে পাবে আপন লোকের বুকে ঝড়ের মুখে। অর্থাৎ আমরা যে দেশেরই হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমরা একটা স্বদেশকে লালন করি, সেটা কিন্তু সমমনোভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে, বা আমরা যদি ইন্টারকানেক্টেড হই, আমরা যদি একে অপরের দুঃখের ভাগিদার হই, তবেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকের মধ্যে সেই স্বদেশকে অনুভব করতে পারবো, আমাদের স্বজাতিকে অনুভব করতে পারবো। আমরা এখানে জন্মেছি, একটা দেশে জন্মালেই যে শুধুমাত্র সেটাই আমাদের মাতৃভূমি সেটা নয়। অ্যানি বেসান্টের মধ্যে দিয়ে আমরা জানাই যে এরকম একটা অকল্পনীয় ভাবনা যে একটি অন্য দেশের মাতৃ হৃদয় তার বুকে বেজেছিল, যিনি তথাকথিত বিদেশি হয়েও। Madhushreee ji, 1 minute for part 1 to finish. To sum up, 1 minute. Okay. I'm just at the end of my lecture. I'm just at the end of it. এবং এটাই কি, এবং তার মধ্যে জেগেছিল এটা যে তিনি তথাকথিত বিদেশি হয়েও কিন্তু তিনি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অপরিহার্য নাম। এবছর বেঙ্গল থিওসফিক্যাল ফেডারেশন এবং বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি যৌথভাবে দুটি অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করেছিল, যেখানে অ্যানি বেসান্ট আমরা করেছিলাম প্রথম অ্যানি বেসান্ট স্মারক বক্তৃতা বেঙ্গল থিওসফিক্যাল ফেডারেশন। There will be part 2 also. Remaining will be in part 2. Okay. Yeah. Okay. তো আজকের দিনে আমরা সেই মহান ব্যক্তিকে কুর্নিশ জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। सर आप म्यूट हो गए हैं। I am so sorry. तपस्विनी जी का परिचय देना चाहूंगा। आप भुवनेश्वर से हैं। उन्होंने MCA किया हुआ है। प्रोफेशन से वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं, IT प्रोफेशनल हैं और रॉयल पब्लिक स्कूल में कार्यरत हैं। उसके साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2009 से जुड़ी हुई हैं और पाइथागोरस यूथ लॉज से वो संबंधित रखती हैं और त्रिवेणी में लगातार वो आती रहती हैं। तो आइए आप हिंदी में 10 कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मेरा आवाज आ रहा है सही से? जी आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। आज का जो विषय वस्तु है, जो अनी बेसांत जी के लाइफ हिस्ट्री के ऊपर है, जो कि ब्रदर शिखर जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए और जो सिस्टर थी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। मैं कोशिश करूंगी उस हद तक कुछ एक्सप्लेन करने की। तो इधर हम लोग जो अभी जो विषय वस्तु लिए हैं अनी बेसांत जी के लाइफ हिस्ट्री का,
तो उनका जो महत्व है वो सारे जगह में फैला हुआ है, सबके लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। इनका जो महात्म्य है, इनका जो लाइफ का जो मोटिव है और उनका जो पॉजिटिविटी है ना, वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। अगर हम लोग उनके जो लाइफ हिस्ट्री को अपने ऊपर लेंगे ना, तो हम लोग का लाइफ के ऊपर उनका जो महात्म्य है बहुत अच्छे से झलक आएगा। तो अन्वेषण के जीवन के उस पहलू के बारे में कुछ घटनाएं और अंतर्दृष्टि को सांज्ञा करते बहुत खुशी और सम्मान की बात है, जो न केवल व्याप्त है बल्कि मेरे समझ से इसका एक स्रोत भी है। उनके जीवन के हर दूसरे पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह जीवन के इस आयाम के संपर्क के कारण था जिसमें अन्वेषण को जीवन का एक बिल्कुल नया और व्यापक दृष्टिकोण दिया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एचपीवी के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर अन्वेषण जी के जीवन के कई चरण से गुजरी हुई हैं, जैसे कि गृहिणी, नास्तिकता का परिचय, ट्रेंड यूनियनवादी, नारीवादी नेता आदि बहुत चरणों को वो उन्होंने मतलब अतिक्रम किया था। फिर क्या हुआ उनका जीवन में, कैसे चेंजेस आया, मतलब कि जैसे हम लोग नॉर्मल लोग के बीच में होता है ना, नेगेटिविटी होता है ना, हम लोग मतलब हिंसा आता है, किसी के ऊपर रूठना, किसी जेलसीनेस, वो सारा चीज उनके पास भी था, क्योंकि वो भी हमारे जैसे लाइफ वो जीते थे। बट उन्होंने जब ये महसूस किया और उनका जो चेंजेस किस प्रकार आया, उसके ऊपर ये चर्चा करते हैं हम लोग अभी। तो उनके अंदर में चेंजेस कैसे आया, नेगेटिव क्वालिटीज को छोड़ के कैसे पॉजिटिव क्वालिटी में कन्वर्ट हुआ, उनका सफर कैसा था। तो वो बोले कि जब वो मैडम ब्लाभास्की के साथ जुड़े हुए, ब्लाभास्की ने उनको ज्ञान का सही मार्ग दिखाया, अर्थात जब उनको इच्छा हुआ कि उनका जो बिटर एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो फेजेस क्रॉस किए थे ना, उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने तब गैदरिंग किया था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। मतलब उनको वो तो कर रहे थे, बट उनका जो मतलब जैसे होता है ना, हम लोग काम करते चलते लेकिन एक पीसफुलनेस वो नहीं आता था। तो उनको जब ये समझ में आया, तो वो मैडम ब्लाभास्की उनको ज्ञान का परिचय दिए, सही मार्ग दिखाए। तब उनको मतलब मैडम ब्लाभास्की ने उनको क्लियरली बोला कि जब तक आप अपने परेशानी का कारण, यानी कि अपना जो रूट कॉज है, उसको नहीं पता करोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा, आपको पीसफुल जीवन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे कि आपको कुछ पेन होता है कहीं पे भी, मान लीजिए आपका दांत में पेन है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से पेन किलर खा लेते हैं, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, पर पूरा टाइम तक राहत नहीं मिलता। फिर मिठाई मिल जाएगा, खा लेंगे, फिर दांत, फिर वही आ जाएगा पेन। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको वो जो दांत है पूरा रूट से उसको निकाल देता है, तब जाके पूरा परमानेंटली हमको राहत मिलता है। तो मैडम ब्लाभास्की ने भी अन्वेषण जी को वही समझाया कि जब तक आप अपने परेशानी का रूट कॉज नहीं निकालेंगे, नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक आपको वो परेशानी का हल नहीं मिलेगा। यही जो रास्ता है मैडम ब्लाभास्की ने अन्वेषण को दिखाया। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं हटाएंगे तो वो जेनरेशन बाय जेनरेशन आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक अच्छी चीज उन्होंने कहा था, अगर हम लोग देखिए, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी को, अगर मुझे पता नहीं है इस दुख का कारण मैं कैसे उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ पाऊंगी, तो वही चीज मैं मेरी बेटी को वही चीज सिखाऊंगी ना, तो दूसरा कुछ तो नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझको तो पता नहीं है उसका कारण, एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या है। तो वो भी सीखी
फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वही चीज सिखाएगा। तो ऐसे क्या होगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी वही चीज स्प्रेड होगा। तो तब भी अन्वेषण को ऐसा ही लगता था। तो उनको जब बहुत मतलब कष्ट होता था या किसी चीज में परेशानी होता था, वो क्या करते थे, बाहरी सहायता लेते थे। जैसे कि अभी हम लोग करते हैं, पढ़ाई नहीं आता है, पढ़ाई नहीं होता है, तो बच्चों को हम लोग एक अंगूठा जो होता है ना, रिंग, पॉल का रिंग और डाइम, ऐसा कुछ होता है जो बोलते हैं ये पहन लो तो अच्छा हो जाएगा, ये खा लो तो अच्छा याद आ जाता है, तबीयत खराब है तो थोड़ा जादू टोना ऐसा कुछ कर लो तो हो जाएगा, तबीयत सही हो जाता है। तो ये भी अन्वेषण जी भी वही बाहरी सहायता लेते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था तब इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। इसीलिए वो जो उनको रिलीफ देता था वही उनको अपना लेते थे, जो भी मतलब बाहरी सहायता है उसको अपना लेते थे। इसीलिए अभी जो सफरिंग चल रहा है उसको दूर करने के लिए अब अकल्टिस्ट को कुछ स्टेप लेना चाहिए सही मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है एक्चुअल रीजन क्या है सफरिंग का। इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सही मार्ग दिखाने के लिए। तो हम लोग को पता है, मतलब जैसे कि उनको तो समझ में आ गया, लेकिन वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग, जब अभी भी बहुत सारे ऐसे जनरेशन है, ऐसे लोग हैं जिसको भी ये ज्ञान चाहिए है। फिर हम लोग को पता है कि जैसे डायमंड मतलब हीरे की परख कब होता है, जब उसके ऊपर एक लाइट, अगर लाइट आता है ना उसके ऊपर, तो चारों तरफ से वो ग्लेज उसका जिस साइड्स में देखोगे तो उसी का मतलब ग्लेज आएगा, डायमंड ग्लेजिंग करता है ना। तो एनिबेसन जी को भी डायमंड के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि उनका जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो पर्सनालिटीज है, सारे मतलब सब कुछ हम लोग अगर देखेंगे तो उनका जो पर्सनालिटीज है वो सारे तरफ मतलब आकर्षित करता है हम लोग के जीवन के ऊपर। वो एक बड़े ऑकल्टिस्ट है, पर कभी कभी लोग क्या करते थे, डाउट करते थे, अरे ऑकल्टिस्ट, ऑकल्ट वर्ड क्या है, थोड़ा मिसकंसेप्शन भी आ जाता था, उनको मतलब सही से पता नहीं चलता था। तो ये जो ऑकल्ट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, उसका अर्थ है जो छिप मतलब जो गुड़ तत्व जो छिपा हुआ है, जो हमको फिजिकली नहीं दिखता, फिजिकली महसूस नहीं कर पाते, जो फिजिकली समझ में नहीं आता, जिस लोगों के सहारे में हम ऑकल्ट वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, उनको हम लोग ऑकल्टिस्ट बोलते हैं। तो जो टीएस का जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो भी इंडिकेट करता है कि ट्रू ऑकल्टिस्ट होने का मतलब ऑकल्टिस्ट क्या है उसका उसके बारे में जान। नेचर में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे लॉज है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, दिन के बाद रात कैसे होता है, क्यों हम लोग सुबह उठते हैं रात में, बहुत सारे चीज नेचर में, इतना साइंटिफिक लॉज वगैरह इतना सारा चीज है, उसके जो एक्चुअल रीजन क्या है उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो है एक्चुअल ऑकल्टिस्ट का काम, नेचर का सारे लॉज को जानना। तो 1889 में उनको विश्वास हो गया कि कुछ छिपी हुई चीज, कुछ छिपी हुई शक्ति है, और वो जो खोज रही थी उससे हर कीमत पर पाने के लिए जो बेताब हो गई थी। लगभग 15 दिन के बाद अन्वेषक खुद ही HPB बाबासी के द्वारा लिखे हुए द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कुछ भाग लिखते हुए पाए गए, और किताब पढ़ने के द्वारा उनको एहसास हुआ कि उनकी लंबी और थका देने वाली खोज खत्म हो गई है, और यही कारण है कि द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ने यह मतलब स्पष्ट कर दिया कि हमारी वर्तमान क्षमताएं जितना समझ सकती हैं उससे कहीं अधिक जानने की जरूरत है।
again I repeat this, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी वर्तमान क्षमताएं जितना समझ सकती है उसके कहीं अधिक जानने की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद। तपस्विनी जी, आपका थोड़ा सा वीक कवरेज है पर वॉइस बहुत अच्छी से आई। शिखर जी, प्लीज गो अहेड विथ योर सेकंड पार्ट। थैंक यू। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। Thank you, Sister Madhushree ji and Sister Tapaswini. Before I proceed with the remaining of the session, just wanted to share why I chose this topic, because we know that this is the 175th birth anniversary year of Dr. Anniebesant. So that is one thing. But other thing is, what happens many times that there have been stalwarts or very remarkable individuals whom we, revere so much, respect so much, that we make idol of them. And not only of people, when we make idols of God. But what happens, we make the idol of an ideal, like how the ideal person should be, how a god should be, or how a very great person should be. So we make an idol of an ideal. But what happens next is that instead of trying to become like that ideal, we become idol. And just by, in case of God, we would say we start worshipping. We think there is a gap between us and God, or us and any, let's say, enlightened being or any saint. And that gap between us, created by our mind, makes us think that only the worshipping, only revering the person, that idol is enough. Which is often the case. What happens is that instead of that, what is really required is to make is to really think of the ideal every time we look at an idol, and instead of remaining idle, we try to fill ourselves with inspiration that even that person was at some point like us, and so there is a possibility in the future for us. Just like all the masters, the Mahatmas, the adepts, they always say that at one point of time they were in humanity as we are today, and today where they are, we will be at some point of time, depending how much time, how much duration, depends on one's conviction, dedication, and effort. And that's what the life of Anniebesant exemplifies, that how much she was ready to give up in this search for truth, in this search of that equanimity and peace of mind. And coming back to our theme, where we left in the first session, that she got the chance to write the review of the book, The Secret Doctrine. And after writing the review, she obviously wanted to meet H.P. Blavatsky. And she described in her own words her first meeting conversation with H.P. Blavatsky. She says it was a very general conversation, nothing so special about it, or no word of occultism at all. So she met her, went back, and then she wanted to join the Theosophical Society. So she expressed her desire. She became a member of TS, and with her diploma, that is a certificate, she went again to H.P. Blavatsky and expressed her desire that she wanted to be a pupil, a disciple of HPB. And to that, Anniebesant writes that Madame Blavatsky's very tough face softened,
And with tears in her eyes, she put her hand upon Mrs. Besant's head and said that you are a noble woman, may the master bless you. And that was all. And thus, Annie Besant's journey to being a great occultist started. And two more incidences that convinced the Countess Wortmeister, where H.P. Blavatsky was staying with whom, that Annie Besant can be a possible successor to HPB. Because HPB had a lot of such, I would say, powers, along with her sense of selflessness and working for, the humanity. One day, she saw Mrs. Besant enveloped in a cloud of light, the master's color, and she saw that he was standing by her side with his hand over Annie Besant's head. And she rushed to Madame Blavatsky and narrated what she had seen. And Madame Blavatsky confirmed the truth of the incident. So it was not a hallucination. And similarly, at a lecture to workmen, Countess saw the master standing by Mrs. Besant and felt that Annie Besant spoke with an eloquence not noticed before. And while living with Madame Blavatsky, now here comes the secret of her being an occult, her growth in such a short time, because many of us, think that any teacher, let's say in this case, example from Mahabharata, Dronacharya had so many disciples, and only Arjuna became the best archer. Of course, there was others also, who was not, the other also, Eklavya, who was not Dronacharya's disciple. But again, even the secret for anyone, any individual in skill is practice, regular practice. So while living with Madame Blavatsky, Mrs. Besant spent some time every evening with her to receive occult teachings. And as a result of this, when Annie Besant was supposed to go to US and to meet William Q.And. Judge and work there to expand theosophy, H.P. Blavatsky wrote an introductory note to William Q.And. Judge in 1891, and she described Annie Besant as the soul of honor and uncompromising truthfulness. Unselfishness and altruism is Annie Besant's name. And then she writes, it is only a few months she has studied occultism with me in the innermost group of ES, and yet she has passed far beyond others. So that gives us a hint of, actually there is no competition going on. The only thing to measure or observe is where we are, what we are doing. But the secret to success is to practice, abhyas, like Sri Krishna also says in the Bhagavad Gita. And apart from that, we all know how at the suggestion of Mr. A.P. Sinnett, Mrs. Besant and Mr. Leadbeater started looking at the chemical elements with their clairvoyant sight. And the results of their observation appeared for the first time in the magazine Lucifer in 1895. And later these investigations were brought out in much more detail in the book that we know as Occult Chemistry. And not that occult chemistry only, so many books like Ancient Wisdom and the other, along with the C.W. Leadbeater, she has written Lives of Alcyone and many other books in which earlier there was no such literature about the subtle words that we are living all the time with. So that was a great contribution in the form of literature also. But one thing that stands out, her realization, because very often we think, why am I in this situation?
especially when we are not in a good situation. Whenever challenges or problems or things come in our life, we think that why? I mean, why is this happening to me? Why am I in this situation? Or why am I not getting what someone else has got, etc., etc. So Annie Besant writes her realization about meeting H.P. Blavatsky. She says, I have sometimes wondered of late years whether if I had met her then or seen any of her writings when many years earlier, whether I would have become her pupil. She's, asking to herself, thinking of herself. And the answer comes, she says, I fear not. Why? I was still too much dazzled by the triumphs of Western science, too self-assertive, too fond of combat, too much at the mercy of my own emotions, too sensitive to praise and blame. Can we relate to some of these things within us? That yes, I think all of us are sensitive to praise and blame and very much at the mercy of our emotions or ambitions or desires. We are many a times too much self-assertive and ready to argue to prove that I am right. So in that state of mind, we cannot hear the voice of the silence, the voice of the master, or we cannot actually, even if at that moment, if somebody brings us a very wise advice or counsel or tell us something to do, we will not just pay attention to it. So that is why, and I think what I'm going to read next may be her source of inspiration to write that book, Pain, Its Meaning and Use. Because whenever pain or suffering comes in our life, or challenges or problems come in our life, they are actually there to help us grow, to help us go much deeper, to give us a much deeper aspect or insight about the life. And that is what happened in Annie Besant's life. And she says that I needed to hear more deeply the depths of human misery, to feel yet more strongly the lack of wider knowledge and of clearer light, if I were to give effective help to human being. And she writes, before I could bow my pride to crave admittance as pupil to the school of occultism, before I could put aside my prejudices and study the science of soul. So therefore, to walk on this path, basically to learn anything, we have to keep our pride aside, we have to keep our prejudices aside. And that is why what the term at the feet of the master also symbolizes, that the first qualification is vinamrata. In Hindi, I'm using the word humility. Humility is the first requirement to learn. And what is the message that Annie Besant gives in her autobiography? She writes, the same path of knowledge that I am treading, it's not like it's only open for her. She says it is open to all others who will pay the toll demanded at the gateway. That is very important. Basically, when we cross the highway, there are many tolls, and you can only cross when you pay the toll, the fees. So that's what she's saying, that anyone who is willing to pay the toll can, walk this path. Just like J. Krishnamurti writes that this is what I have been told by my master in At the Feet of the Master, and he just followed it. And in this case, what is the toll or what is the charge, she says? And I would like to emphasize on this, that toll is willingness to renounce everything
for the sake of spiritual truth, and willingness to give all the truth that you have received to the service of humanity, keeping back no piece for oneself. I would repeat it, that the toll is willingness to renounce everything for the sake of spiritual truth, and willingness to give all the truth that is received to the service of humanity, keeping back nothing for oneself. And in the end, Annie Besant's contribution as an occultist, we all know, is magnificent, and we can go on talking and talking about so many things. But her gift to humanity, with which I would like to close, is, I feel, one of the greatest gifts that could not have come out of her without her being a great occultist. And by occultist, I mean a person who sees and knows the hidden interconnectedness and working in nature. Not someone who just has some powers, but who sees this interconnectedness of everything in nature. And that gift of Annie Besant is the universal invocation that we now call in 1923, which is like a potent mantra. Every time it is pronounced, it creates a magnetic effect of uplifting everyone's consciousness. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. And undoubtedly, Dr. Annie Besant was a great occultist during whose presidentship the Theosophical Society not only touched its peak in terms of numbers of member, assets, and influence on the world, but also accelerated the preparation of India's freedom movement. And therefore, it does not seem at all a coincidence that when we are celebrating 175th anniversary year of Annie Besant's birth, it is also the 75th anniversary year of India's independence just done. So with this, I would like to rest my voice, and I would like to thank the opportunity for me to share some thoughts, and Sister MADHUSHREE and Sister TAPASWINI, TARAL and everyone. Thank you. थैंक यू शिखर जी, थैंक यू सो मच। और तपस्विनी जी, मैं आपको स्पॉटलाइट करना चाहूँगा। पहले हम आपका ले लेते हैं, मधुश्री जी का करेक्शन थोड़ा सा जा रहा है तो वो बाद में आएंगी। तपस्विनी जी, कैन यू प्लीज ऑन, या आपका आ गया वीडियो, प्लीज गो अहेड विद द हिंदी वर्जन, शी विल कम आफ्टर 12 मिनट्स। थैंक यू। थैंक यू शिखर जी, और बने रहिए, बाद में भी हम कुछ बात करेंगे। शुक्रिया। तो एनी बेसेंट जी का सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। तो सेकंड पार्ट में जो है, उनके जो समीक्षा लिखने के बाद वो एचपीवी से हेलो ओए दे रहा है सुनाई? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है तपस्विनी जी? हाँ जी। तो समीक्षा लिखने के बाद वो एचपीवी से मिलना चाहती थी, और उन्होंने एचपीवी के साथ अपनी पहली मुलाकात की बातचीत को सामान्य बताया, जिसमें जादू विद्या का कोई शब्द नहीं था। टीएस में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने एचपीवी के समक्ष एचपीवी के छात्रा बनने की इच्छा व्यक्त की। मैडम ब्लावात्स्की का कठोर चेहरा नरम पड़ गया और आंखों में आंसू भरकर श्रीमती एनी बेसेंट के सर पर हाथ
रखकर बोली, आप एक नेक महिला हैं, मास्टर आपको आशीर्वाद दे। और इस तरह आनी-बेसेंट जी का एक महान ऑकल्टिस्ट बनने का सफर शुरू हुआ। दो और घटनाएं से भी मालूम होता है कि जैसे कि ब्रदर शिखर जी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो एचपीबी के बाद अगर मतलब देखा जाए तो उनका उत्तराधिकारी आनी-बेसेंट बन सकती थी, जो दो घटनाएं के बारे में चर्चा हुआ। तो मैडम ब्लावात्स्की के साथ रहते हुए आनी-बेसेंट गुप्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर शाम उनके साथ कुछ समय बिताती थी। इसके परिणाम स्वरूप जब एचपीबी ने आनी-बेसेंट के परिचय में WQJ को लिख के बोला, मतलब उनको एक नोट भेजे थे, तो उनपे स्पष्ट लिखा था, उनके लिए एक अच्छा, मतलब उन्होंने एक सेंटेंस, बहुत अच्छा लाइन लिखे थे कि सम्मान और समझौता ना करने वाली सच्चाई की आत्मा, निस्वार्थ और परोपकारिता है, उनका नाम आनी-बेसेंट। और हम सभी जानते हैं कि कैसे श्री एपी सिनेट के सुझाव पर श्रीमती बेसेंट और श्री लेडबिटर ने अपनी दूरदृष्टि से रासायनिक तत्वों को दिखाना शुरू किया। उनका उनका एक एहसास था, जैसे हम लोग का होता है ना कि हम लोग कुछ समय के बाद कुछ एहसास मतलब करते हैं, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर इस तरह से होता। तो इधर जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि यदि वो पहले से ही ब्लावात्स्की की छात्रा बनते तो वो और भी अच्छा कुछ सीख सकते। फिर भी उनको डाउट है कि वो सीख नहीं पाते। देखिए कैसा है, वो बोल रहे हैं कि अगर वो उसके पहले भी इनका छात्रा होते तो और अच्छे से सीख सकते। फिर बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ असर्टिव था और वेस्टर्न साइंस मतलब उनके ऊपर उनका थोड़ा ज्यादा झुकाव था। मतलब वेस्टर्न साइंस का मतलब क्या है, वो मतलब बहुत डेडिकेटेड थे उनके। जैसे होता है ना, हम लोग एक धर्म में होते थे, मतलब है, अगर हमको बोला जाएगा कि कोई दूसरा धर्म में जाओ एक, तो वो हमको दिक्कत होता था, मतलब होगा क्यों हम लोग जाएं, क्योंकि वो वेस्टर्न साइंस में इतना मानते थे और कोई साइंस और ये थियोसॉफी जानने का उनका इच्छा ही नहीं दिखाती थी, मतलब उसका इच्छा ही नहीं था। उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था कि मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। वो खुद ही जब सोचते थे ये चीज, तो भला कोई दूसरा कोई उसको उनको क्या सिखा सकता है, अगर उनके खुद के ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंट था उस टाइम। तो वो ना बहुत इमोशनल भी थे। तो ये चीज को सब सोच के वो तब बोलते कि हाँ, फास्ट वो सोचते हैं कि मैं अगर ब्लावात्स्की का स्टूडेंट होती तो अच्छा होता। फिर सच तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास इतना नेगेटिव क्वालिटी था, फिर कैसे होता? ये नहीं होता क्योंकि उनका कुछ पर्सनल लिमिटेशन था, जिस वजह से वो पहले भी मैडम ब्लावात्स्की के स्टूडेंट नहीं बन पाए। और जब भी बने, जितना जहां से उनका शुरू हुआ टाइम पीरियड उनके छात्र के बाद भी, तो वो पीरियड में जितना उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है वो काबिले तारीफ है। तो वो उसके लिए अपना जो मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम लोग लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, पर वो सेटिस्फाई थे कि हाँ जितना भी हुआ वो सही था। वो एक मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ जो भी है, मतलब हम लोग का जो स्पिरिचुअल पाथ है जो है सबके लिए है। जिनका इच्छा है इस पाथ में जाना चाहता है, जो कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक सैक्रिफाइस और कमिटमेंट करना, मतलब हम लोग करेंगे। इसलिए उसी कमिटमेंट और सैक्रिफाइस के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए। अगर हम लोग को स्पिरिचुअल पाथ में जाना है तो कुछ कमिटमेंट, कुछ सैक्रिफाइस के लिए
हमको कुछ क्वालिटीज चाहिए। वो क्वालिटीज क्या है? पाथ ऑफ नॉलेज। सबको इसके ये जो ज्ञान है इसके लिए कोई भी एज नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसका इच्छा हो वो। और क्या है नेक्स्ट? वो हमेशा रेडी रहेगा। दैट मीन्स कि वो गिव अप करेगा, मतलब कुछ पर्सनल अटैचमेंट हो या डिजायर हो, वो रेडी रहेगा हमेशा। कभी भी जब भी उनको जरूरत होगा वो गिव अप करेगा। मैटेरियल पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। मुझे ये फिजिकल जो खुशी है, मुझे फ्रीज का पानी नहीं चाहिए, टीवी, वो जो हम लोग अभी नॉर्मली में वो बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा चीज है जो कि हम लोग को पता है। हमेशा सच्चाई का राह चुनेंगे। जैसे सच्चाई का राह चुनेंगे मतलब जैसे आजकल के पॉलिटिशियन लोग चुनते हैं, झूठ मतलब झूठ मूठ बोल के भी सर्विस डाल देते हैं, सर्विस देते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन झूठ मूठ बोलते हैं, बट बोलते हैं कि हम लोग सर्विस दिए, ऐसा काम किए, वो काम। ऐसा सच्चाई नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग सर्विस देंगे बट सच्चाई की राह चुन के। खुद के लिए कुछ ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, मतलब हम लोग अपने लिए ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को समर्पित करने के लिए ज्ञान हासिल करेंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग अगर ज्ञान लेते हैं इस चीज का, उसका प्रयोग खुद के लिए नहीं बाकी दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। लास्टली हम लोग अगर बोलेंगे कि अन्निबेसंत एक महान समाज सुधारिका, महिला कार्यकर्ती, सुप्रसिद्ध लेखिका, थियोसोफिस्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और प्रभावी प्रतिभा थी। वे भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के हक के लिए लड़ाई भी लड़ी। तो उनका जो जीवन की कहानी है, जितना भी हम लोग बोले वो कम ही होगा। खाली इतना ही बोलूंगी, अगर हम लोग उनका कुछ भी चीज अगर लेके चल सके तो वो हम लोग के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद सुन्नी जी। मधुश्री जी प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए सो आई कैन स्पॉटलाइट यू। मधुश्री जी, मधुश्री जी आपने करीब करीब सेकंड पार्ट्स भी स्टार्ट कर दिया था, तो जो सम अप बचा था वो पूरा कर दीजिए। थैंक यू। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। Yeah. हो गया। Is it okay? And if I can stop my video, then I can have a look on into the that second part of the theme. Already I have given a gist of that second part in my speech. So once again, I want to see that second part, and then it will be easier for me, the English translation. And then if I can speak, it will be easier for me. So can I just stop my video and then speak? Yeah, speak in Bengali, and after you can stop. Okay. 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 Please go ahead. Yeah. তিনি আমাদেরকে একটা আধ্যাত্মিক একটা মেসেজ, একটা বার্তা দিয়ে গেছেন। তিনি সবসময় এটা বুঝিয়েছিলেন তার আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে যে আমরা কেউ কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে একটা আলাদা সত্তা নই। এই সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি এবং আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল যে মানব সত্তা, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে আমাদের একটা গভীর সংযোগ আছে। এই বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত সত্তা, সেটা যেভাবে যে প্রাণী হোক, আমাদের প্রত্যেকে কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে ইন্টারকানেক্টেড, বা আমাদের একটা গভীর সংযোগে আমরা চলছি। এবং তিনি যে ইউনিভার্সাল প্রেয়ার, তার মধ্যে দিয়ে তিনি যেটা তৈরি করেছিলেন, তার নির্যাসে এইটা নির্যাসে কিন্তু তিনি এই
ইউনিভার্সাল প্রেয়ারের মধ্যে দিয়ে গেছেন, এবং সেখানে জ্বর এবং জীব নির্বিশেষে তিনি প্রতিটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে গেছেন, সেটা লিভিং হোক কিংবা নন লিভিং হোক, জ্বর এবং জীব। যখন উনি বলছেন, এবং যেটা আমরা যতবার সেটা উচ্চারণ করছি, একটা অদ্ভুত তরঙ্গ আমাদের সকলের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। যখন আমরা বলছি ও হিডেন লাইফ ভাইব্রেন্ট ইন এভরি অ্যাটম, যে প্রত্যেকটা অ্যাটম, আমরা প্রত্যেকেই অনুপরমাণু দিয়ে তৈরি, সেটা একটা ইট হোক কিংবা একটা লিভিং ক্রিয়েচার হোক, সেটা একটা হাতি হতে পারে, বাঘ হতে পারে, গাছ হতে পারে, মানুষ হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু সেই অ্যাটম রয়েছে, আমরা অ্যাটম দিয়ে তৈরি, এবং তার মধ্যে একটা প্রাণ আছে। ও হিডেন লাইট শাইনিং ইন এভরি ক্রিয়েচার, এবং প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে জ্বর এবং জীব নির্বিশেষে সেই আলো তিনি দর্শন করছেন। তিনি সেই আলো এসে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমাদেরকে কি বলবো, আলোকিত করছে। ও হিডেন লাভ এমব্রেসিং অল ইন ওয়াননেস, এই যে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে ভালোবাসা, সেটা আমাদের সকলকে আলিঙ্গন করছে। আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের যিনি তৈরি করেছেন তিনি এক, তিনি ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের ফিলিংস, পরম ব্রহ্মের ফিলিংস তিনি মানে সেই উপলব্ধি, পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার বাণী তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে গেছেন। মে ইচ who feels himself as one with thee know he is also one with every other, যে সকলের মধ্যেই তিনি রয়েছেন, আবার আমরা সকলের মধ্যে। এই যে we can feel the microcosm of the universe, যেমন আমরা ভাণ্ডেতেই ব্রহ্মাণ্ড, আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেই কিন্তু আমরা সেই পরম সত্তাকে, সেই ইউনিভার্সাল ট্রুথকে, সেই পরম সত্যকে আমরা অনুভব করতে পারি। আমরা এটা যখনই বুঝতে পারছি যে অ্যানি বেসান্ট তিনি শুধু যে একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শুধু তাই নয়, তাকে আমরা এখন নতুন ভাবে আমরা আবিষ্কার করছি একজন জাদুবিদ্যা চর্চাবিদ হিসাবে, এবং যার সভাপতিত্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটি তার প্রসিদ্ধির শিখরে উঠেছিল, এবং সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল সেই সময়। এবং একটা অদ্ভুত ঘটনা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে স্বাধীনতার যেখানে ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব আমরা পালন করছি, এবং সেই সময় আমরা কিন্তু অ্যানি বেসান্টের ১৭৫তম জন্ম বছরও পালন করছি। এটা কাকতালীয়, কিন্তু এটাই সত্য। এবং এইখানে যে ইন্টারকানেক্টেডনেস, এইখানে যে বিশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্ব মানব সত্তা তার সঙ্গে যে কানেক্টেড, সেই জন্যই কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে। একজন জাদুবিদ্যা চর্চাবিদ হিসাবে তিনি যে সত্যানুসন্ধান করেছিলেন, আজকের দিনে আমরা তাকে কুর্নিশ জানাই। Sir, unmute please. Sir, unmute please. Yeah, thank you Madhushri ji, that was very well, and আপনি খুব ভালো বলছেন अगर मेरे सही हो तो। Shikhar ji, anything you would like to add, because you have some time, so if you wish to add, Madhushri ji, you can also add in English, and Tapaswini ji, you can also add if you want to add on this subject. Yes, sir, thank you. And the only thing is, yeah, that I would just like to extend my gratitude, that's all. And if somebody else would like to add in this, because many people, I mean, many senior members, theosophists are here who knowing actually just one example of how her belief, I would not say belief, her understanding of laws, of occult laws was that, Annie Besant used to empty her bank balance or whatever accounts money she used to have at the end, last day of every year. Oh. So on the first day of the year, she did not have any money. So the person, her secretary who used to live with her, said that, you empty out everything. Suppose somebody comes next day to ask for help, what will you do? How will you help? So she smiled and okay, she said, okay, nothing much. And that actually happened. That there was a situation when she had nothing, and
one person, poor person in Varanasi, came to her asking, people used to call her Amma, that I have to, I have some marriage coming up of my child, so I need certain amount of money. Let's say, for example, 5,000 rupees and that time. So now this person who was the secretary became very curious. Now Annie Besant does not have any money. How will she help? So Annie Besant told that person to wait and went inside. This person became even more curious that why she is not telling the person that she does not have anything, but he decided to wait, watch, and soon after, another person came, and that person called out Amma, and then he said that, Amma, I have this much money, 5,000 rupees, that I just want to donate. You please give to anyone who, who needs help. And then that person went away. Then Annie Besant gave this money to that person who was waiting, and he also went away. Then the secretary, he became like, what magic was this, and how did you do, what did you do, you went inside or anything? So she said one more thing that shows her, how much conviction she had and realization of that law she had, that once you start living for others or selflessly, no purpose of yours will remain unfulfilled. Means everything will just flow from you, but since we want to hold on to things, we want to keep the things for ourselves to the last something, and that is the only thing that prevents this from happening. So the law of nature demands everything or nothing at all. So that's why everywhere in theosophy we study about selflessness, sacrifice, or thinking gradually, killing out the self. That's also in Light on the Path. So the more and more conviction we get in these laws, the more of life will become like that. So that was the thing that I wanted to share. If anything has anything to share, please, most welcome. Yes, Hasmukh bhai, Vimal ji या हर्षवर्धन भाई, हसमुख भाई unmute कीजिए. Just beautiful revision of the studies which we have made in past, but this talk really prompts me to act and put into my own life. Every aspect of it will definitely turn out to be a gem in our art. So act, but act. My resolution is to act upon it. Act upon it. Yes, thank you. thank you, Hasmukh bhai. Yes, Vimal ji. Annie Besant's the thing that I personally take inspiration from is that at every stage of her life, when she saw a higher truth, she followed it. So what's very interesting is that when J. Krishnamurti and she used to be seated on the platform in their speeches at the same time together. But once she realized that what is coming from him is coming from a higher source, she started sitting in the audience. She didn't sit at equal. So when people asked her about him, that he has now closed the mystic star, the thing, and he has moved out of theosophy, she said that, when he's talking, all I want to do is listen. So there was a time when she actually wanted to leave everything and go and be with him, but something stopped. So my research there is incomplete, but the beauty is that every single time, there's so many times, and what is beautiful is that every time she was wholeheartedly believing in that, fully, so it was not, there was no doubt in her mind at any stage. When she was a Christian, she was a devout Christian. When she was a free that thinker, she was fully into that. So I think that's what we have to, our truth we have to begin with. So what is truthful to us now is our stepping stone to higher truths.
That's how I think. And J. Krishnamurti himself told Annie Besant not to come with him because he said, no, that is your work you are doing and let me do my work, kind of thing. Yeah, Manushree, Thank you. would you like to add anything? I think I'm. So whatever we do, we should do dil se. Yes. Yes, yes, yes. Yes, Harshna, please go ahead. Harshna जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, वो बोलिए। दिल से बोला Yes, इसलिए yes. मुझे प्रॉम्प्टली याद आ गया कि मांगो दिल से मिलेगा मोर। हर्षवर्धन भाई go Very ahead. nice. Very nice, very nice. शिखर जी बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी हद तक इतना आनंद आ रहा था, आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया, रियली इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और पहले तो ये बंगाली में जो ट्रांसलेशन किया मधुश्री है ना? हाँ है ना मधुश्री जी। ओके, अच्छा, उसको भी धन्यवाद मैं दे रहा हूँ क्योंकि शी रियली डिड इट वेरी नाइसली। Certain words we just, being the Gujarati people, we tried to catch them, but cannot understand fully. Tapaswini also, you translated very nicely. Shikhar ji, two things are there. You put stress on occultism, the wonder story of occultism that expands in the after years and became more important about the mysticism. So just one question, it is not a question, but my somewhat understanding in that way, some two different things are there, occultism and mysticism. So will you just focus on that? Oh, well, actually, thank you, Harshvardhan ji. You have raised a very nice and actually, in a way, they both of them, because you see, mysticism is also something which is related to, very people misunderstand it, something, you know, mysterious or something which a normal person don't understand. But again, mysticism is also, the approach is a mystic who is called a mystic, who has realized the oneness of all. The one, I mean, the individual, God and man, a human, God and universe, everything is one. That is a mystic. Occultist is also when we are saying occultist, I want to even more be specific, real occultist, because and a mystic can definitely be an occultist, but an occultist may or may not be a mystic, because occult powers having, suppose somebody knows something about these occult powers, or even start seeing all this interconnectedness, but still, if there is selfishness remaining within, those powers can be misused, and that will lead that person to the downfall. But mystic, a person mystic is who has already realized the oneness, and then these powers of nature become his servants. I mean, he or she has already crossed that limit of selfishness or thinking about oneself. But of course, a person who is trying to be a mystic or on that path, who is still on the path, also there are possibilities to fall. I mean, just like any disciple or who is walking the path may have its ups and downs. So, but this difference, H.P. Blavatsky has made it very clear in her very small booklet, Practical Occultism. Actually, even in the Theosophist also, that not every occultist can be a good theosophist, but a very good theosophist, if the theosophist has some understanding of occult powers, can be an occultist. So that's what, in my understanding, whatever I have, I see these two words, but they are very closely related. I don't know how much I'm able to explain or share.
No, thank you. Really, it clears certain things. Really, you have gone so far and you have explained very nicely, and I'm very grateful to you. Another thing about just you gave the example of Dr. Anniebesant that she had nothing on the 31st of December in the bank, Yes. and she completely just gave away everything on that last day. And from the very 1st of January, the whole empty account was there and donations were accepted. So this was a kind of miracle that happened, that you gave the example that happened in Varanasi. Yeah. So really certain things are there. And one word that is really utilized as a quotation for Dr. Anniebesant is that she Indianized India. Yes. She Indianized India. So whatever the activities she carried out, and for the young people, I think 5 or 6 organizations were there for, just like today the word YMCA is very popular in that way, Young Men's Christian Association. In that way, she created certain organizations which are highly connected with the young people, and she propagated all those activities. So she took care of the young people more than what the other experienced people were there. Some elderly people were there. So she had a lot of trust in young people's mind, young people's strength, and making them understand the meaning of theosophy. So she expanded the lodges. What just you explained very nicely, that during her time of presidentship, there were more lodges. There, I think the areas were also expanded in the headquarters also. So that is the history that we come across. So thank you very much. And really today's this Triveni program is really nice. On 20th September, we pay homage to Dr. Anniebesant because she passed away on 20th September 1933. So this month, that is the month when on 20th September, we will really remember her very heartily and pay our homage to Dr. Anniebesant. Thank you. And this is also the centenary year of the universal invocation that we Yes. so lovingly. Yes. Thank you so much, Harshvardhan ji. Thank you. मधुश्री जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आप कुछ पहले कह रही थी about something you have done in Bengali region or something which we missed in Bengali. Please unmute yourself. Actually, this year, since throughout the country we are celebrating Azadi Ki Amrit Mahotsav, so similarly, on behalf of Bengal Theosophical Federation and Theosophical Society, we have organized 2 memorial lectures on Annie Besant. One has been delivered by our president, means the president of Bengal Theosophical Federation, Brother Pankaj Kumar Dotto. He delivered a speech on the Annie Besant's contribution on theosophy and India's freedom movement. And then there is another speech that has been delivered by Brother Pranatosh Bandyopadhyay. He has highlighted on the aspects of this Bengal Theosophical Society, Annie Besant's means contribution in women emancipation. In this, because as you all know that Bengal Theosophical Society is a heritage organization in Bengal, and it is very much attached with the memory of Annie Besant. So we had this back-to-back 2 memorial lectures on Annie Besant, and that way this is very significant from this Bengal Federation to celebrate 175 years of Annie Besant. Thank you for sharing this. It is really wonderful. Yes, Premlata ji and Archana ji, आप दोनों कुछ कहना चाहती हैं? तो बारी-बारी से फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं. Then we'll go to end. नहीं, मैंने ये सुना हुआ है कि एनी बेसेंट जी इतनी अपने इंडियन औरतों को बात कर सके उनके लिए वो उन्होंने साड़ी भी पहनना शुरू कर दिया था या पहनती थी कि लोग उनको एक्सेप्ट कर ले. ये भी एक अच्छी बात है कि जेल होने के लिए उन्होंने अपने में इतना बड़ा बदलाव लाया. ये सुनी हुई बात है. सो आई थिंक शी ट्राइड इन ऑल एस्पेक्ट्स टू गेट द अटेंशन.
तरल जी, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम बोलिए सुषमा जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी को और जिन्होंने अनुवाद किया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अभी एक प्रश्न पूछा था हर्षवर्धन जी ने कि ऑकल्टिज्म और मिस्टिसिज्म में क्या अंतर है। तो शिखर जी ने बताया, उसी बात को मैं अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ कि मिस्टिसिज्म वो है जब हमारा सेल्फ समाप्त हो जाता है और निर्विकार भाव हो जाता है और हम उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं करते, यानी वो अनुभूति संप्रेक्षणीय नहीं होती। जैसे कबीर ने कहा, लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यानी इस जो कबीर ने जो अनुभूत किया उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जो ऑकल्ट पावर है, जैसे शिखर जी ने बताया कि जैसे थॉट पावर में एनिबेसेंट ने जो 7 लेवल लिखे हैं कि मैटर है, यानी एक सब प्लेन में जो 7 प्लेन होते हैं कि एक मैटर है, द्रव्य, ठोस, गैस, ईथर, सुपर ईथर, सब एटॉमिक और एटॉमिक। जो ये उन्होंने अकल्ट पावर से जाना वो उन्होंने शेयर करा, लेकिन जो चीज उन्होंने अनुभूति की उसको वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। ये डिफरेंस है दोनों में, जो मैं ऐसा समझती हूँ कि एक संप्रेषणीय है, एक संप्रेक्षणीय नहीं है। मिस्टिसिज्म संप्रेक्षणीय नहीं है और ऑकल्टिज्म की पावर संप्रेक्षणीय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रेमलता जी, फिर हम Good evening, everyone. Thank you so much for this lecture. We can keep listening about Annie Besant again and again, and all the tidbits that the speakers shared. It was very good. Even if we read books, you know, it is nice to hear and it gets into our mind easily when we listen in such lectures. Thank you so much. And regarding Annie Besant, she's her favorite for all, and every time I read her book, I keep reading the last page where there is an explanation about her, how she has been a diamond soul, a free thinker, how she has revolutionized India. It's only after joining Theosophy that even though we have read history and all in childhood, but after joining Theosophy we get to learn more about such souls. And the Thought Power book and Thought Forms book by her, the 7 Principles of Man, and books on karma are amazing books that we don't find easily in other literature. They are very deep subjects and well written, and I feel the youngsters should be definitely, the young theosophists and youngsters should be definitely apprised of these books, which are very important. We will not be able to take drastic decisions, negative decisions in life if we really read these books. The Thought Power and Karma, how we understand the constitution of man, what is man made of. It's not just the body, it's about the mental body, the astral body. If we understand our thought forms, that is the basic that I felt that even a budding theosophist should definitely read first to understand. It is an amazing book explaining everything about thought forms, how thought becomes an entity, and how we can transform our negative thoughts, how we can improve our thoughts. Every solution is given in that book, and it is quite difficult actually. It's not just one read that we can understand these types of books. We have to study again and again and listen to such lectures, and we can really evolve and know our destiny. Even the ancient wisdom, the timeless wisdom, karma books, we will have doubts again and again. We have to discuss in such sessions and then only get clear. Thank you so much for this session, Taralji. It is nice to know that about the September 20th date. Also, we should have more lectures about Dr. Besant. Thank you. Thank you, everyone. So much. And I think Atulji, now we can go for the finishing thing. Atul bhai. Yes, Atul bhai, go ahead. કેશવરબેન સિંહોનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः,
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संनो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम